Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Prashant Thakur and today we are going to solve LeetCode daily challenge problem. So for today the daily LeetCode challenge is earliest finish time for land and water second. So okay, so जो कल हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की थी वो अर्लीस्ट टाइम फॉर लैंड एंड वाटर राइट वन थी, आज उसी का अपडेशन है. ओके, so let's first understand the problem statement and then we will discuss about approaches and how can we also optimize this code. So yeah, so let's first read the problem statement. You are given, so मतलब आप एक थीम पार्क पे हो और आपको आपके पास दो ऑप्शन है कि आप लैंड राइड कर सकते हैं एंड वाटर राइड. सो लैंड राइड के लिए हमें दो एरियाज दिए हैं कि लैंड राइड एक स्टार्टिंग टाइम, मतलब कि लैंड राइड स्टार्ट कब कब हो रही हैं एंड वो उनका एंड वो कितना ड्यूरेशन ले रही हैं. मीन्स कि सपोज़ एक राइड स्टार्ट होगी 2 पे, सपोज राइड स्टार्ट होती है 2 पे एंड वो ड्यूरेशन लेती है 5. तो क्या बोलते हैं कि 2 मतलब स्टार्टिंग टाइम प्लस द ड्यूरेशन टेकन बाय द राइड, सो वी ऐड. ओके, सो कोई भी राइड 2 पर स्टार्ट होती है एंड वो 5 यूनिट टाइम लेती है, तो टोटल टाइम वो कितना लेगी 2 + 5. ओके, कि मतलब 2 पे स्टार्ट हुई और 5 यूनिट उसने टाइम लिया, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा उसे उस राइड को करने के लिए 7 यूनिट. ओके, एंड सिमिलरली फॉर वाटर राइड्स, तो हमें वाटर राइड पे भी सेम स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है एंड ड्यूरेशन टाइम एंड ओके एंड एंड and a tourist must experience exactly one ride from each category in either order. A ride may be started at opening time or any later moment. Okay, so हमें कंडीशन लगा दी कि हमें एक राइड तो करनी ही करनी है दोनों में से. ओके, और उसके साथ साथ ये कंडीशन है कि कोई भी राइड अगर ओपन है तभी हम उस पर राइड कर सकते हैं. कि मीन्स अगर कोई राइड टी टाइम पे स्टार्ट होती है तो हम वो राइड टी टाइम या टी टाइम के बाद ही कर सकते हैं. सपोज़ एक राइड 5 यूनिट टाइम पे स्टार्ट होती है एंड तो हम उसे कब ले सकते हैं. तो ऑब्वियसली बात जस्ट 5 है, 5 के बाद मीन्स 6, जस्ट 5 पे भी ले सकते हैं, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. मीन्स हमें 5 के बाद ही लेना है. ओके, सो ऑन. एंड सेकेंड है कि इफ़ अ राइड स्टार्टेड एट टाइम टी एंड इट फिनिश्ड राइड इज स्टार्टेड एट टाइम टी एंड इट फिनिशेज एट टाइम टी प्लस ड्यूरेशन. सो मीन आपकी राइड स्टार्ट होती है टी पे एंड ड्यूरेशन लेती है सपोज एक्स. सो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट राइड इज टी प्लस एक्स. सो ओके, कि जब आप एक राइड कंप्लीट करते हो तो इमीडिएटली दूसरी राइड पे जा सकते हो अगर वो ओपन है. अगर नहीं है तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो ओपन नहीं होती है. जब ओपन हो जाएगी तब उसे मतलब तब फिर उसे ले सकते हैं. एंड हमें क्या करना है, रिटर्न द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच द टूरिस्ट कैन फिनिश. ओके, सो हमें दोनों राइड्स कंप्लीट करनी है, दोनों में कितना टाइम, हमारा टोटल टाइम कम लगना चाहिए. सो या हमारे पास दो अप्रोच है, पहला ब्रूट फोर्स एंड दूसरा ऑप्टिमाइज अप्रोच. सो पहले बात करते हैं कि ब्रूट फोर्स के थ्रू कैसे कर पाएंगे प्रॉब्लम. सो ब्रूट फोर्स में हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम दो टाइप के पॉसिबल केसेस ले सकते हैं. पहले कंप्लीट करें वाटर राइड देन लैंड राइड, और एक और ऑप्शन है कि पहले लैंड राइड देन वाटर राइड. एंड जो इनमें से मिनिमम पॉसिबल आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. तो हम क्या करेंगे कि दोनों के ऑल पॉसिबल पेयर्स चेक करेंगे, जिसके लिए हमें 2 लूप्स लगेंगे, एक वाटर राइड पे एक लैंड राइड पे. जो भी मिनिमम आंसर होगा वो रिटर्न कर देंगे. ओके, सो फॉर land ride and so pseudo code for this problem is water ride. So this is our brute force approach, and it's talking about its time complexity. So it take order of and multiplied by order of m complexity, which is not acceptable in this solution. You can see the constraint and value of nm, which can till 5 into 10 to the power 4. So here the solution of n into m, which is around n square, is not acceptable. So we have to optimize this problem. So
लेट सपोज आपको वाटर राइड के लिए जाना है, तो इनमें से कौन सी राइड आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे? सो क्या वो 10 होगी, 15 होगी? नो, इट्स definitely going to be 5, because 5 is the earliest. If we finish first ride in earliest possible time, then we can minimize the time in first ride, and start a water ride at earliest possible time. Okay, so definitely we will going with the minimum finish time of land ride and then water ride. As similarly, if we are doing water ride first, so then minimum finish time of water ride, and minimum finished time of all water ride, and then we can go to next ride, which is land ride. Okay, so rides of rides. So for water rides, minimum it is finishing it is minimum of finishing time of land rides, and similarly for water ride, it is minimum time of water rides. Okay, so let's take a case. We complete land ride at 5, but water ride open at 8. So can we take water ride immediately after completing land ride? No. For that we have to wait till 8 unit time, so that water ride start, and then we can take. Okay, so let's take another case where land ride end at 5 unit time, but water ride start 3 unit time. So can we take immediately water ride after completing land ride? Yes, because water ride is already open. So answer in first condition. So for that, to complete water ride, we take 5 unit time, and for waiting to start the water ride is 5 plus 3 unit time. And suppose water ride takes 2 unit time to complete. So 2 unit time to complete, so so total answer is 10. But here our answer is to complete water ride we take 5 unit time, and we are, because water ride is open, so there is zero time for waiting. Zero time for waiting means we can immediately start water ride, and time taken to complete, suppose water ride take 2 unit time to complete, similarly as in first case. So 3 plus, so here 8. So here our final answer is 8. Now now so we can generalize. Okay, so here we can generalize these two conditions in one formula, which is uh, like our answer is finish maximum of land finish and water finish. Similarly, this is going to be true for if you complete water ride first and then land ride. So water finish and land start. Okay, and so we declare L and W variable. L used to calculate the minimum possible time to complete land ride, and W is to calculate the minimum possible time to complete water ride. And answer W is calculating the minimum possible answer to complete water ride, and then no, and answer list stand for the W is you used to calculate the minimum possible answer for completing land ride then water ride. Okay, and answer W WL is stand for completing water ride then land ride. Okay, and when calculating the size of arrays of both the rides, and this is used to this, and
here we are calculating. So here you are calculating minimum ending time of land right. So okay, so here okay, so we have given four areas: land starting time, land duration time, water starting time, and water duration. For that, we initialize four variable L, which is used to calculate the minimum possible complete to take water right, and W stand for minimum possible time to complete water right, and answer LW represent the answer of answer of answer of first completing land right and then water right, and answer WL represent the minimum possible time to complete water right then land right. So yeah, and and here we are calculating the size of both the reservoirs, and now we uh, iterate over land sites and calculating the minimum possible time to complete water right, and LSI plus LD representing the end time of water right. And after that we are iterating over water right and calculating the minimum possible time to complete the water right. And similarly we also calculate the answer of first completing land right and then water right. So simultaneously we are also calculating the answer for land right then water right, and in the last loop we are calculating answer of answer of okay. So now after this loop we have answer for land right then water right, and now in this loop we are calculating answer for water right then land right, and from this array we have answer for land right then water right, and from this array uh, we are we- and from this array we are having answer minimum possible answer for complete water right then land right, and our final answer is the minimum of answer answer or answer of land right then water right, and answer of water right and land right. Okay, so that's it. And talking about time complexity, so it's take order of n, and it's also take order of m, and it's take order of n. So overall time complexity will be order of n plus n. Okay, so that's it. That's it. Thanks for watching. If you're facing any problem, then let me in the comment section. I'll be happy to clear your doubts and queries. And again, thanks for watching. Happy coding.